Of course, by now you're all aware about the population control bill that has been proposed by the UP government. ये बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक हमारी पॉपुलेशन ही हमारी हर प्रॉब्लम की वजह है, चाहे वो लैक ऑफ डेवलपमेंट हो, बढ़ती इनइक्वालिटी हो, लैक ऑफ रिसोर्सेज हो, एवरीथिंग. So this got me thinking whether there is some truth in it or not. While on one side there are a lot of people who agree with Mr. Adityanath and hailed UP Sarkar's decision, but on the other side there are those who have pointed out few problems with it. See, I'm not getting into the politics of it. I'm not saying there is a link between the upcoming state elections in UP and population control bill, but the narrative that has been woven around population control is kind of problematic. And that's why I think it's necessary for us to talk about the myths and set the record straight. Myth number 1. India is experiencing a population explosion. No, it's not. So Economic Survey of India 2018-19 के अकॉर्डिंग हमारी एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ घटी है पिछले कुछ डेकेड्स में. जहां 1971 से 1981 के टाइम पर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी 2.5%, वही घटकर 1.6% हो गई है 2011 से 16 तक. बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जिनको हमेशा से पॉपुलेशन टिकिंग बॉम्ब माना जाता है ना, वहां पर भी पॉपुलेशन घट रही है. इंडिया के 19 स्टेट्स में द टोटल फर्टिलिटी रेट, व्हिच इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन इन हर लाइफ टाइम, हैज डिप्ड बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल of 2.1 births per woman. 2018 में यूपी का फर्टिलिटी रेट 2.7 था और 2025 तक गवर्नमेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग 2.1 हो जाएगा. और 2.1 फर्टिलिटी रेट चाहिए होता है पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहां हो रहा है? मिथ नंबर 2. पॉपुलेशन कंट्रोल बिल विल एम्पावर women. Really? Who are we fooling? It will only take away power from women or further increase unsafe or sex selective abortions given the deep-rooted fondness for sons in our society. And going by the history of population control in India, women from Dalit, Adivasi and Muslim communities have disproportionately suffered. And you know, in our country, the burden of contraception has always fallen on women. In 2013 and 14, India carried out nearly 4 million sterilizations. Out of those, only 10,000 of these surgeries were done on men. Myth number 3. High population leads to poverty and hinders development. You know, there is no established connection between population growth and development. You know, 1960s और 80s में साउथ कोरिया और ताइवान में रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, मगर उनकी पर कैपिटा इनकम घटी नहीं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओवर पॉपुलेशन और पॉवर्टी को लिंक करके हम गरीबी का बर्डन ना इंडिविजुअल पर डाल देते हैं, rather than correcting the structural inadequacies that propagate them in the first place. Myth number 4. Population control doesn't target any community based on caste, religion or class. You know, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमेशा से अपनी एनर्जीज फोकस करी है ऑन प्रिवेंटिंग द रॉन्ग सॉर्ट्स ऑफ पीपल फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग. द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2000, for example, clearly outlines the target groups that the country needs to discipline in order to achieve population stability by 2045. These groups are urban slum dwelling populations, tribal communities, hill area populations, displaced and migrant populations and adolescents. और ये सिर्फ क्लास बेस्ड कैटेगरीज नहीं है. थोड़ा गौर करोगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि इन कैटेगरीज में आदिवासी, दलित और मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा है. हम जैसे अपर कास्ट मिडिल क्लास लोग नहीं है, इवन दो वी आर द ऑथर्स ऑफ इट. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जो डिमांड है ना स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन पॉलिसी की, इट डेफिनेटली हैज कम्युनल ओवरटोन्स टू इट. दिस बेसलेस फियर दैट द हिंदू पॉपुलेशन will be outpaced by the Muslims. So according to the 2011 census, Hindus are 79.8% of India's population and Muslims are 14.2%. Also, the Hindu and Muslim fertility rates are falling at an equal pace. It's 2.8 for Hindu women and 3.4 for Muslim women. So currently our national fertility rate has fallen to 2.2%, which is not far from the required replacement fertility rate of 2.1%. So my question is, at a time when India's population is near stabilization, why are we lying about an ongoing population explosion? Why do we keep spinning this narrative that overpopulation is the root cause of all our problems when in reality there's no real evidence supporting it? To me, it just feels like a convenient excuse which our policymakers use time and again to divert our attention from real issues that can actually make our lives easier. Yes, I'm thinking aloud, but what do you think? Tell me in the comments below, and for more such videos, keep watching India Times.